Bismillahirrahmanirrahim. Respected Principal, Sister Elizabeth Nyamat, Provincial Superior Sister Angelina Francis, Reverend Sisters, Reverend Fathers, Sardar Shah, Minister Education, Anthony Naveed, Tanzila Kamrani Sahiba, Secretary Education, distinguished guests, parents, students of St. Joseph's Convent, Assalamu alaikum. It's a real pleasure to be here. I guess it was a couple of months ago, Sister Nyamat came to see me along with Sister Angelina Francis, and they asked me to come for this event, the 160th year celebration of St. Joseph's Convent. And I said yes immediately, and there was a reason, and I told them that. So, just go back about 50 years ago. I was studying at St. Patrick's High School, years behind, and I had my sister studying here from 1969, 5 sisters, so my elder sister and then my younger sisters, from 69 to 86. And for 17 odd years, I was never allowed to step inside the gate of the school. I remember Francis, I don't know if Francis is still alive or not. He is not. May Allah, may Almighty grant him peace. Francis was the chowkidar at the gate, and we were all terrified of him. I used to come here first with my father, and he'd park the car a little further away. I'd come down so that I can take my sisters, and they would take, and in this heat of Karachi, be standing outside waiting for them to come out. So we had one and then had 4. Later on, I used to drive and bring them to school and then take them back. And again, Francis knew me, so he'd allow me to come near the gate and drop them off. It makes space for me. So very, very fond memories. But as I said, never set foot inside the gate. So when they told me, and when I came in here, first thing I saw was the building, and the second thing I saw was the uniforms. I've lived with that uniform for 16 years, seeing my sisters go into the school. So, a personal moment for me, and obviously a great moment for the school who served the city of Karachi, the girl students so well. As I told you, I studied just down the corner. I see Mr. Anthony De Silva sitting there, the principal of St. Patrick's High School, and I remember each and every one of my teachers. When I started off, Father Raymond was the principal of the school, Father Stephen Raymond, and then later on, I think when I was in class 8 or something, yes, it must be class 8, Father Lobo, later Bishop Anthony Lobo, became the principal, and I have very, very fond memories of Bishop Anthony Lobo. I was fortunate enough, during his last days, I found out that he was in Rawalpindi, and I was a provincial minister at that time. I'd gone to see him at the church, and he vaguely remembered me, though he had come to my wedding also, and I have that picture when Father Lobo came for my wedding. That time I remember my sisters taking names, and I was just recalling, sitting down here and putting down names. The principal at that time was Sister Xenia Pinto, and we had Father Pinto, the head of the primary school at St. Patrick's around the same time. And I was just thinking, I do remember some names. I don't know, most of the teachers would have retired. So I remember my younger sister, her favorite teacher was somebody called Miss Thanani, and later on she passed away. And I remember my
that's how I remember my younger sister being very sad on her passing away, because she said she was my favorite teacher in school. And I also remember the teacher they were most terrified of in school. It was an Urdu teacher, Miss Jahan. So again, I don't know if she's also passed away. May Allah give her the highest place in heavens. So it was for me, a dream come true that I could enter the school. When Sister Elizabeth had come over, they'd spoken about the old building. This is the oldest church, even before St. Patrick's Church, the first church was here, and it needed some repairs. We did some work on St. Patrick's Cathedral a few years ago, and then I told Sardar Shah, fortunately Sardar Shah Sahab, apart from being the Minister of Education, is also the Minister for Culture, and he has this interest and eye on history. So I told him, and he's told me that the heritage people have already visited, and I promised that we'll restore the building in its original shape, maintain it, and inshallah, we'll do it soon. You'd asked me for some roads around the school, and I'm happy to know that that work has started. Some of the work has been done. So the association with the school is very old, my personal association, and we are all indebted. The government of Sindh, the people of Sindh are indebted that you're imparting valuable education to our girl students. Talk about my sisters, 3 of them went on to become doctors. The 4th one was gold medalist at the IBA after studying here, and she worked for the best companies in Pakistan, and now she's in Riyadh. And my youngest sister worked in education, and 2 years ago she was awarded the Tamgha-e-Imtiaz by the Pakistan government, and I didn't know about it till she got it from the federal government. And this was when I was not too friendly with that federal government when she got the Tamgha-e-Imtiaz. And it's all because of the education that they brought here. I've become what I am because of the education. I started off at St. Bonaventure in Hyderabad. Then I studied in another school, Brooklyn Private School in Karachi, then came to St. Patrick's and went on to study further. But the foundation that these convent schools have built in us, the character, the discipline that they've built in us, lives with us forever. And that is what has made us successful. Today's event was also a very, very pleasant morning spent when I saw the young students, the girls performing. And what I like is, and my motto is this song that this sang. It has one verse, one sentence which catches me, and that is, you need to see something good in everything you see. That's my message to you. That's very important. The world is a difficult place, but I tell you, it becomes a very easy place when you see something good in everything that you see, in the hardships that you face, in the difficult times that you have. I'm sure the Almighty has something good in it for you. So that will be my message for you today. And once again, I thank the St. Joseph's Convent School for inviting me here today, for having me here. As I said, the association has been very old, and inshallah, St. Joseph's will keep on serving the people, the girl students of this province, till eternity. Once again, thank you very much. Pakistan Zindabad. सबसे पहले तो आपने मर्दमशुमारी को कहा, आपने अभी मुझे बताया, मुझे नहीं पता था, मैं ज़्यादा देखने को कि पीटीआई एहतजाज कर रही है मर्दमशुमारी पे। मुझे बड़ा अजब महसूस हो रहा है कि जब कराची को 1 करोड़ 60 लाख गिना गया था, पूरे सिंध को 4 करोड़ 70 लाख के करीब गिना गया था, और मैंने उस पर एहतजाज किया था CCI में, तो पूरी पीटीआई मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थी।
अब वो एहतजाज कर रही है। मुझे बड़ा वैसे हैरत हुई है कि पीटीआई, लेकिन उसमें कोई वैसे हैरत की इतनी बात भी नहीं है। कभी मतलब पता नहीं, कल कहेगा कि नहीं वो मुराद अली शाह ने असल में साजिश शुरू की थी, फिर उसने ए को कहा, ए ने बी को कहा, बी ने सी को कहा, फिर उसने मुराद अली को। तो ये वही बात हो गई है पीटीआई की। तो मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। जमात इस्लामी ने भी कोई ऐसी ख़ास इवन मैं कहूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी उस वक्त उस को एग्री किया था इस शर्त पे कि जी आप दोबारा जल्दी मरदमशुमारी कराएंगे। मरदमशुमारी जब शुरू हुई भी, मेरा पहले दिन से उसके पूरे तरीक़ेकार पे और उस पर हमने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं और वो अभी तक पूरी तरीके से दूर नहीं हुई हमारी। कुछ ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं सुना, हमें कुछ ज़रूर किया है, लेकिन अभी तक हमारे ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। और मैं फिर आपको बता दूँगा, एक बड़ा सिंपल स्टेटिस्टिक्स है, नंबर ऑफ़ पीपल पर हाउस होल्ड, यानी एक घराने में कितने लोग हैं। इस वक्त भी सिंध का पूरे पाकिस्तान के एवरेज से कहीं कम है, और ये हमें बड़ा अजीब सा लगता है। पता नहीं, मुझे अवार्ड देना चाहिए पॉपुलेशन वेलफेयर वालों को इसके ऊपर, या कहना चाहिए कि ये गिनती गलत हो रही है। तो ये हमारे इतराज़ात अभी तक हैं और वो हमने एड किए, और मैंने कहा कि इस सूरत में मैं काबीना से हिदायत लूँगा, और मुझे नहीं लगता कि काबीना मुझे इजाज़त देगी कि इस सेंसस को सपोर्ट करें जिस तरीके से इस वक्त है। अब वो बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट, इसलिए मैंने 12:30 बजे एक और मीटिंग में पहुँचना है। आइन के अंदर 90 दिन इस पर भी लिखे हुए हैं कि अगर कोई कौमी असम्बली, कोई सूबाई असम्बली की सीट खाली हो जाती है। इस वक्त कितनी सीटें खाली हैं जो कौमी असम्बली की, वहाँ 90 दिन याद नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन याद नहीं आ रहे हैं। पंजाब के अंदर भी 90 दिन गुजर के अब याद आ रहे हैं 90 दिन दोबारा। तो ये सेलेक्टिव चेरी पिकिंग जो है ना, ये नहीं, और जिसका कोई पे हमें नज़र आए कि इसके पीछे कोई साजिश हो, कोई मकसद हो। मैं ये नहीं कह रहा कि साजिश कौन कर रहा है, ना मैं जजेस के ऊपर कह रहा हूँ कि वो साजिश कर रहे हैं, शायद वो अप्रिशिएट नहीं कर सक रहे इस चीज़ को। मैं ये कहूँगा अगेन, दे आर वेरी वाइज, उनको करना चाहिए, उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तो ख़र्चा, आप इस मुल्क जो इस वक्त वैसे ही परेशानी में है उस पर आप डबल खर्चा कराना चाहते हैं। आपकी जो कह रही हैं सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस कि ये वक्त सही नहीं है, हमें एक वक्त दें। हम बार बार देखें, हमने ताज़ा सेंसस का सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, सारा अमल फटीक हो जाती है जो उसके अंदर आ जाता है। आपके पोलियो की मुहिम वगैरह चल रही होती सब, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक जब पता होता है ना, पहले से एक पता है मुझे कि जी अक्टूबर में होने, तो मैं अपनी ट्रूप्स को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरीके से रिजर्व में रखता हूँ कि वो उस वक्त, लेकिन अगर आप पूरा साल ये चलाते रहेंगे तो फटीक हो जाएंगे, वो कर नहीं सकेंगे। तीसरा, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट। सूबा पंजाब 50% से ज़्यादा है। हमारी आइन कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी ये भी फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, और पंजाब में इलेक्शन हो। तो हमने कहा कि जब चीज़ आइन में डालेगी तो आइन को एज ए होल पढ़ना चाहिए, एक शिक पे अटक नहीं जाना चाहिए जो अटक गए हैं। आप एज ए होल पढ़ें और इसका हल निकल आएगा, और इसका हल निकला हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी ईगोज़ के ऊपर आ जाएंगे, फिर वो कि जी मैं सही था, मैंने एक गलत फैसला भी किया तो अब मैं उस पर अटका रहूँगा, ये गलत, मैं ये भी नहीं कहूँगा गलत फैसला था, जो मौके के मुनासिबत से सही फैसला नहीं किया। बजट महीने दे रहे हैं, बजट महीने दे रहे हैं जून में। जून में पता नहीं, मैं तैयारी नहीं है भाई, बजट की तैयारी करनी होती है। आप पता नहीं ये समझते हैं कि बजट जो है ना वो ऐसी दफ्तर में, बजट जून में ही होगा, ऐसा कोई इरादा नहीं है जल्दी करने का। मैंने मुझे पता है ना, वो अक्सर हमें अक्सर चीज़ें काबीना से पता, सॉरी मीडिया से पता चलती कि ये हो रहा है, जिसकी जहनों गुबार में भी गुबार में भी। देखिए मेरी बात सुने, बारिश तो रोक नहीं सकते अल्लाह ताला की तरफ, हमने उसकी तैयारी करनी है। और उसके लिए जैसे ये बारिश की अभी एंड ऑफ अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मई में थोड़ी सी स्पेल्स का है खदशा, हमने जो भी आज इस वक्त एज आई स्पीक प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग चल रही है सारों के साथ, तो तैयारी कर रहे हैं। ज़रूर हमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर अल्लाह ना करे वो पिछले साल जैसी बारिश हुई तो हमें संभालना मुश्किल होगी। इसमें क्या अल्लाह ताला की जो आजमाइश है उससे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने पहले भी कोशिश की थी, और इसका मैं कहता हूँ ना प्रूफ जो है ना वो आ जाता है
इतनी शदीद सैलाब के बाद सूबा सिंध में इलेक्शंस हुए इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो लोगों के साथ खड़ी रही, बाकी सारे वो ज़बानी जमा खर्च करते रहे और वो रिजल्ट नज़र आ गए। अभी भी हम अपने लोगों के साथ होंगे जब बारिश होगी। आपने स्कूलों का जिक्र किया, मिनिस्टर साहब मेरे साथ खड़े, हमने कई इक़दाम किए, शेल्टर्स भी लेके ताकि उन बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। हमने अभी रिसेंटली जो आपको नया फंड एक फंड अवेलेबल किया है ताकि उन स्कूल्स को रिपेयर भी किया जाए।